Good evening, viewers. My name is Pranesh Kumar Roy. You are watching the News Hour special edition on Times 9. A fresh controversy. Asaduddin Owaisi's AIMIM's UP chief Shaukat Ali made a provocative speech at a rally in UP's Sambhal. Owaisi's Neta branded Hindus as Kide Makode and said that if Sadhu, who claim to chop Muslims, see angry Muslims, then they would empty their bowels. Shaukat Ali also made a controversial remark on Hindu marriages. He said that even if Muslims have two marriages, they give respect to both the wives, but Hindus marry once but keep three mistresses. Rakhel is the word used by Owaisi's Neta. Listen it to believe it. कभी ये लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे ज्यादा हो, कभी ये लोग कहते हैं दो तीन शादियां। यकीनन हम दो शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम एक शादी करते हो, तीन रखते हो, किसी को नहीं बताते हो, ना उसको इज्जत देते हो। लेकिन हम अगर दो करते हैं तो इज्जत से करते हैं, बीवी बनाते हैं। उन बच्चों का नाम भी राशन कार्ड में होता है, आधार कार्ड होता है। और तुम्हारे नाजायज करदा बच्चे क्या करते हैं? यही जो हुआ है इसौली विधानसभा में नारे लगा करके मार करते हैं। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे हो। और ये कह रहे, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संडास और पेशाब दोनों कर डालो। After this hate speech was captured on camera, there has been no comment either from Shaukat Ali or from his boss Asaduddin Owaisi. Police have registered an FIR against Shaukat Ali for his inciting comments, and action will be taken. Meanwhile, political blame game has begun. Sample the reactions. आज एक तो पहली बात, एक धारा 144 का उल्लंघन किया गया था AIM के कार्यकर्ताओं द्वारा, जिसमें शौकत अली और उनके साथ अन्य कार्यकर्ता भी थे। उसमें जो है हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। वो लोग हम लोगों की बहन बेटियों के लिए गलत बोलते हैं, तो आज हम लोगों को एक बात साफ कर देते हैं कि हिंदू ना किसी से दवा है ना दबेगा। पहले अपने भाषणों को बोलने से पहले या जनता को रिझाने के चक्कर में, या आप मुस्लिम वोट करते हैं तो उन मुस्लिमों को रिझाने के चक्कर में किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। संभल पुलिस के द्वारा एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए शौकत अली, जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इनके द्वारा संभल कस्बे में एक प्राइवेट कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कतिपय बातें कही गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक प्राइवेट व्यक्ति की तहरीर पर शौकत अली के विरुद्ध धारा 153A, 295A और 188 के अंतर्गत FIR पंजीकृत किया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये ओवैसी साहब की पार्टी और ओवैसी साहब का काम है समाज में जहर फैलाना। हम लोग देश को एक साथ रखने की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, वो इस प्रकार की जहर घोलते हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि ओवैसी साहब अपने लोगों की चिंता करेंगे और उनको सबक सिखाएंगे किस प्रकार की भाषा पब्लिक लाइफ में बोलनी चाहिए। जिस प्रकार की वो गटर वाली भाषा इस्तेमाल करें वो राजनीति के लिए ठीक नहीं है। नहीं, उनका जो काम है वो कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की टीम भी है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, AIMM जैसे लोग पहुंच जाते हैं। द रियलिटी इज दैट नोबडी कैन थ्रेटन एनी कम्युनिटी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच कम्युनिटी यू रिप्रेजेंट और वेयर यू कम फ्रॉम। आई strongly condemn what he has said, and he is doing this at the behest of the BJP. Who wants polarization in this country? The BJP. Who assists them in polarization? AIMM. You heard the reactions. Let's open this up. Mithun Vijay Kumar, political analyst; Asif Sohail, political analyst; Pawan Rao Ambedkar, the national spokesperson of the AIMIM, will soon be joined by Gargi Nandi Roy. Now, good evening, gentlemen. Mr. Ambedkar, let me begin by asking you, what is your assessment of what your Neta Shaukat Ali has said? What do you think? Thank you. Good evening to everybody.
I just want to tell you, he was telling the reality of this country. He was telling that since 1206 to 1857, there was a rule of Islamic system. This is the reality. And he was telling the reality that in the cabinet of Akbar, 4 persons were there and holding their hands. Who were those persons? 4 persons? Tansen, Birbal, Raja Todarmal, Raja Man Singh. These four persons were in the cabinet of the Akbar's regime. Isn't this reality? Let's fast forward to 2022. This is the okay. Now you are the right point. Now we are talking about the 2022. Since 26 January 1950, we are under the rule of constitution's rule. We are under the rule of law. Where were the people when in Haridwar people were trying to destroy the democracy of this country by creating the hatred in the name of religion? What were they telling? Take the sword and clean the. Now, Mr. Ambedkar, I don't know. I don't know how often do you watch our debates. I don't know about the people. No, people will answer. But Times Now had taken a position even then. Listen, no. 1 minute. No, sir. For us, hate is hate. We call out hate, irrespective of which side it comes from, Mr. Ambedkar. You can go back. No, you can go back. You will find those clips on Twitter. You will find it on our website. You will also find it on YouTube. Mr. Ambedkar, how dare you lecture us on that? You cannot do that. No. I'm daring. When Parvesh Verma, Mr. Ambedkar, now listen to me. When Parvesh Verma crossed the line, Times Now questioned him. We called for his arrest. We are still asking for his arrest. He's not even named in the FIR, and he was not alone. There were others also who made provocative speech. Now, now, what do you make? No, you say, no, 1 minute, Mr. Shaukat Ali. No, 1 minute. मिस्टर अंबेडकर ना 1 मिनट सर, काम डाउन, मेरा भी तो सुनिए ना. एक तरफ से कैसे होगा? आपने बोला रियलिटी है, आप अकबर के जमाने में चले गए. अगर ये रियलिटी है, हिंदू कीड़े मकोड़े हैं, हिंदू रखेल रखते हैं, listen, ये भी रियलिटी है. Yes, you are pinching the right point. Now come and listen the answer. Karnataka, there is a place, Ukkarkeri गांव, where is still the Devdasi Pratha. You're not answering the question, Mr. Ambedkar. Hindus कीड़े मकोड़े हैं. Listen, yes, see. Yes. Listen. Hindus are कीड़े मकोड़े for you. अब आप जवाब सुन लीजिए ना. आप तो yes बोल रहे हैं. अब पहले जवाब सुनिए, मैं बता रहा हूं. आप हिंदू का नाम क्यों ले रहे हैं? हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं. हरिद्वार की बात करिए. नहीं, किसके धर्म के नाम पे नफरत कौन फैला रहा है? किसके बात कर रहे हैं? Are you talking about oasis? No, 1 minute. अभी आप listen. ये तो गार्जी नंदी रॉय. आप सुन लीजिए ना. अभी आपने नाम लिया प्रवेश वर्मा का. क्या उनके ऊपर FIR लॉन्च हुई? वो सवाल हम पूछ रहे हैं सर. वो सवाल हम पूछ रहे हैं मिस्टर अंबेडकर. 5 दिनों से हम वो सवाल पूछ रहे हैं टाइम्स नाउ पे. हमने कहा है अरेस्ट दिस हेट, हमने कहा है. अब आपने ओवैसी साहब ने तो बहुत पोजीशन ले लिया था कि देखिए ये देश खतरे में है, ये हेट स्पीच है. ये हेट स्पीच नहीं है, एक ही तरफ का हेट दिखता है आपको. अब आप सुन लीजिए. आप मुझे कोई ऐसा पॉइंट बताइए जिसमें हेट स्पीच है. एक क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं. आप मुझे बताइए क्या 1200-600 से लेकर के 1857. अरे आप 2022 में रहिए ना. आप पीछे क्यों चले जाते हैं अंबेडकर साहब? आप पीछे क्यों चले जाते हैं? अब ये इसी अभी 2022 में रहिए. गार्गी नंदी रॉय इज आल्सो जॉइन द ब्रॉडकास्ट. अरे आप सुन लीजिए, फिर 2022 की बात करें तो आइए. इस देश में संवैधानिक संस्था है, इस देश में लोकतंत्र है. अरे तो लोकतंत्र है. आपने संविधान की बात की है. कौन सा संविधान है मिथुन विजय कुमार? What constitution is this that allows people like Shaukat Ali to say these things? Which constitution allows the Pravesh Verma to speak? Which constitution? Which constitution? Which rule of law allows? You see, unfortunately, the AIMIM spokesperson whose name resonates with that of the man of constitution itself is saying that Shaukat Ali was speaking the reality. Do you know the reality, sir? The hardline fanatics who take pride in identifying themselves as Mughals in free India must understand that the invaders who came here
who came to this land, forcefully married the woman and produced offspring. So if they are able to trace their lineage back, they would be able to understand the reality first of all. And since, these parties, the radical parties, especially since radical groups like PFI and its associates are banned, I think AIMIM's responsibility for spreading communal hatred has increased multifold. And the problem with any party which is built on the premise of religion is that it would surely have some radical elements like Shaukat Ali or Akbaruddin Owaisi, they are actually the finest examples who spread religious venom in this country. You are not seeing the situation of this country. You are not. What situation are you talking about today? You're a leader of your party spreads communal hatred, and you are here justifying it. You are here talking about some. Are you justifying the? Are you justifying the? Are you justifying the Haridwar? Are you justifying the Haridwar Dharma as a person? Are you justifying the Haridwar? How are you relating it even to that? Are you justifying Why can't you take this as a particular issue and comment on that? Instead of that, you are doing this comparison. You are making unnecessary comparisons. You are trying to justify the act. You are essentially trying to justify the act instead of justifying the statement given by the You are actually justifying the act. Are you justifying the statement given by the Pravesh Verma? Hardline fanatics. You are justifying the act of extremists. You are justifying the act of all these radical people who are talking in this country, who are making such speeches, who are making such hatred, who are spilling the venom in this country, and you're justifying them. This is the biggest issue. The people who spew venom are being justified. Do you know the name of Bajrang Buni? Do you know the name of Bajrang Buni? See, I am against all extremist ideologies. Then why are you standing on one side? Your leader has spoken today. Is the biggest question. Why are you standing on one side? When we are discussing about something that your leader has spoken, why are you relating it to other extremist ideologies or other speeches? So let's have it tonight. No, let's call out hate from all sides. No, 1 minute, Mr. Ambedkar. Here I am taking a position, sir. I am taking a position. I am calling out hate of Parvesh Verma, all the others who were there. Times Now has condemned it. Times Now has demanded action. Now, will you condemn what Shaukat Ali has said? You will never get any FIR against the Pravesh Verma. Mr. Ambedkar, will you condemn what Shaukat Ali has said? I am saying that I am against all the extremist ideologies. Would you condemn what your leader has spoken today? That's a very simple question, right? Isn't this the reality that 1206 to 1857 there was an Islamic rule? My God, Mr. Ambedkar, can you not live in 2022? Why do you keep going back, sir? Please. So who were those? Gargi Nandi Roy coming in. No, 1 minute. No, 1 minute, sir. You've made a point. Gargi Nandi Roy. When I asked Mr. Ambedkar, who is the national spokesperson of the AIMIM, I asked him a simple question. I asked him, what do you make of what Shaukat Ali has said? And he says, look, what he says is the reality. Yes. Reality in this country. Reality in Karnataka. Okay, I'll correct him, Pranesh. First of all, let me correct you historically and then I'll come to the next point. Yeah, you had your say. I had an audio problem before, so let me come. Firstly, if our ancestors would have bowed down Ji Huzuri Karta, then this country would not have been a Hindu majority country till today with 80% Hindus. Our ancestors fought sword to sword and blood to blood, from Bappa Rawal to Hamid Singh to Maharana Kumbha, Sangha to Shivaji. So don't teach us history lessons, okay? Now coming to the AIMIM, we don't expect much from the descendants of Razakars. Razakars ke descendants, the member of a party who has glorified Taliban before. What can we expect more? But the government should not take it lightly. Pranesh, the government should understand that there is a politics. There is a politics of Darul Islam and Ghazwa-e Hind behind this. They want, please let me finish. Let me finish. Mr. Ambedkar, let her have a say, please. At least on the national television, let me finish. Don't connect those people. Please don't interject. What I'm saying is there is a politics of Ghazwa-e Hind and Darul Islam because they play the victim card and incite people to propagate this philosophy of Darul Islam and Ghazwa-e Hind and incite riots and violence. So government must be alarmed. This person must be arrested immediately. Okay, we know why this is done. We understand the politics. Why are you we understand the politics. The politics of AIMIM.
the party which has Muslimin in its name gives lecture on secularism. You are giving lecture on secularism when you have Muslimin in your very name. You can't give us lecture on secularism. No, you don't have the courage to raise the voices against the Pravesh Verma. You don't have the courage to raise the voices against the Pravesh Verma. Mr. Ambedkar, don't give excuses that Hindus are saying this because of RSS, BJP. No. This is a democratic country, and raising the slogans of the Hindu Rashtra is against the democratic setup of this country. You've condemned that. I have condemned it. Times Now has. Arrest this hate we've been saying for the last 5 days. After those comments made, 1 minute after the comments were made, no, Mr. Ambedkar, you're still not answering that question. Let me bring in Asif Sohail. Asif Sohail, you've heard the two sides on the debate intently. What do you make, sir, of the comments made by Shaukat Ali? Pranay, I will reply it, but I don't want any interference and disturbance in my statement. Okay? First thing, मैं देखिए ये बताना चाहूँगा, Barrister Asaduddin Owaisi have never discriminated any religion, any caste, any person. ठीक है, he has said it, the investigation, the case is already booked against Mr. Shaukat Ali. Let the investigation report comes out. If he has said, then it's very wrong. We strongly condemn, but ideology of MIM, I think it's not to discriminate anyone. हर किसी के साथ, हर मजहब के साथ Barrister Asaduddin Owaisi सारे मुल्क में चल रहे हैं. He has never discriminated any religion का, हमेशा पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, हर एक. और मैडम, आपको मैं क्लियरिटी देता हूं, AMIM कोई रजाकारों की पार्टी नहीं है. ये AMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है. उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी और उनके वालिद सलाहुद्दीन ओवैसी ने लिए. आप थोड़ा सा नागपुर की स्क्रिप्ट पढ़कर आके इंडिया को मत वो मिसगाइड करिए. जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए. जो मुल्क के मोहब्बत करता था हिंदुस्तान की, वो यहीं पर है. उनके वालिद सलाहुद्दीन ओवैसी और वाहिदुद्दीन ओवैसी. सी मैडम, let me tell me who is his uncle? Who is his uncle? Tell me. आपके पास पूरों का प्लीज. स्लोगन लड़के लेंगे पाकिस्तान. People who gave slogan लड़के लेंगे पाकिस्तान. So then you are saying you have done a favor by मैडम जो बोले ना, he has already went to Pakistan. देखिए, those who have fought for the India, वो यहीं पे. Please don't. देखिए मैडम जी, देखिए मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं. आपको जो एक नागपुर की स्क्रिप्ट देकर बिठा दिया जाता है, आप वही बोलेंगे. फैक्ट्स के ऊपर बात करिए. ठीक है, गलत तो गलत है. जीवन है गलत. Discriminated any religion, any caste. See, we need to condemn. See, there should be. See, sir, Pranay, let me close it. Pranay, wait. देखिए, it can be a ideological. Pranay, it can be a political differences. It cannot be a religious differences. I'm telling you. No, but I'm saying let's call out hate tonight. But let's call out hate. आए दिन मुझे ये बताइए आसिफ सोहेल साहब, आप एक बात बताइए आसिफ सोहेल साहब. मैं फिर से चला देता हूं. मैं एक बार वो क्लिप फिर से चला देता हूं. शौकत अली ने क्या बोला? क्या आपको अभी भी लगता है उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला? वो कह रहे हैं कि हिंदू एक शादी करता है, 3 रखेल रखता है. ये सर, ये हेट स्पीच नहीं है. What I am saying you, आप बोल रहे हैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है. Case is already booked. Let the investigation report comes out. Sir, I am not asking you to. No. I am not asking you to. I am telling you. No, Mr. If the police. Sohail Saab, I am not asking you to. I strongly condemn Shaukat Ali, that's not what I am asking you to do. I am only asking you to take a stand. Do you condemn it or do you endorse it? Obvious, I am telling you now. Let the police give the report on it that the clarity की इन्होंने ये चीज बताया तो definitely. आपको क्या लगता है सुनने के बाद? आपको क्या लगता है? Whether Mr. Shaukat Ali हो आपको RSS हो या but sir, no, 1 minute. Let the police do it. धर्म संसद, no, 1 minute sir, 1 minute. धर्म संसद जब हुआ, उसमें जो हेट स्पीच हुई, तो उसमें आप लोगों ने कंडेम किया, हमने कंडेम किया. हमने बोला कि हेट शुड नॉट बी गिवन अ स्टेज. पुलिस का एक्शन हुआ. परवेश वर्मा और भी जो लोग जमा हुए थे, हमने उसको कंडेम किया.
उसमें असादुद्दीन ओवैसी साहब ने तो पुलिस रिपोर्ट की वेट नहीं किया। नहीं 1 मिनट सोहेल साहब, आप लोग, but सोहेल साहब, you this is the problem, सोहेल साहब, this is the problem. If no 1 minute, you have to first treat hate as hate. Hate can't be, इस तरफ का हेट और इस तरफ का हेट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सोहेल साहब. People are watching you. You're not accepting it. But sir, do you endorse or condemn what Shaukat Ali has said? I strongly condemn. I already said you. Okay, you've condemned. Pawan Rao Ambedkar. That's what I'm saying. Pawan Rao Ambedkar, Asif Suhail condemns the comments made by Shaukat Ali. Do you condemn? प्रणय जी, सिंपली मैं एक स्टेटमेंट आपको दे देता हूँ, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. I will condemn. No, I am glad. Asif Sohail, I am glad. Sohail साहब, you've taken a position. आप कह रहे ये hate speech है, गलत है, you're condemning it. I welcome that. मैं अभी अंबेडकर साहब से जानना चाहता हूँ. Now listen carefully. मैंने अभी पहले भी कहा है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको आप कनेक्ट करें. इस देश में आज भी देवदासी प्रथा चलती है. अब आप एक लाइन सुनिए. नहीं, देवदासी प्रथा को रखेल बोलते हैं. देवदासी प्रथा को रखेल बोलते हैं. What will you call them? Now, रखेल बोलते हैं. अंबेडकर साहब रखेल बोलते हैं. What will you call them? रखेल बोलते हैं. What will you call them? रखेल बोलते हैं. What will you call them? देवदासी प्रथा में रखेल बोलते हैं. मिथुन विजय कुमार. Do you have any name? What will you call them? Talking about everything from Mughal Empire to Devdasi Pratha, but he's not answering one simple question. Would he condemn the speech of his leader? He wouldn't answer that question. He won't answer that particular question. And see, Mr. Asif Sohail was trying to justify Akbaruddin Owaisi, saying that he never made any religion, hate speech. Akbaruddin Owaisi in his speech has taken jibes on Hindu gods and goddesses, and he had openly challenged if police be removed for 15 minutes. Right. Muslim community, the population, the percentage of Muslim community can actually show you what can happen in India. Right? That's the challenge they made. That's the kind of challenge they have made. And Mr. Ambedkar or Asif Sohail, they both are silent on these two topics today. And they are totally not condemning what the leaders have done today, about the speech or anything. They are going back to Mughal period. They would go back to Stone Age. They would say everything else to justify this particular speech. That's highly condemnable. And Mr. Ambedkar, what you need to understand is that your leader has made a hate speech today, and it attracts a particular section. I believe it is section 153 of the IPC, and I believe a case has been already registered. Now, how do you see it? Is a very simple question, and you're not even talking about it. You're drawing attention to some Stone Age period, or you're drawing attention to some Mughal history. You're talking about Mughals. You're talking about everything else, but you're not talking about this particular speech itself. How do you see it? I am against all extremist ideologies. We all are against extremist ideologies. But do you condemn this particular speech? Is the only question, and you're not answering that question. You are silent on that. You are trying to justify what your leader has spoken today. I am shocked that Mr. Ambedkar is saying that, have you not heard of the Devdasi Pratha? Now, I don't want to even get into the details of it, Mr. Ambedkar. Once the show ends, you should go and read up on what the Devdasi Pratha actually was. No, 1 minute. You should actually read up on what it actually was. Are you living in this 1 minute, Mr. Ambedkar, I am not done yet, sir. After the show, you must read up on what the Devdasi Pratha was. But nonetheless, the next bit of the comments made by Shaukat Ali is about Keede Makode. Tum log कीड़े मकोड़े. He is talking about Hindus being कीड़े मकोड़े. अब इसमें भी बता दीजिए कौन सा प्रथा है? The people who are against the democratic setup of this country, who are challenging the democracy of this country in Haridwar, and they are telling that until we get the power, we will fight as in 1857, as was fought. Are you going to support those people? आप समझ ही नहीं रहे अंबेडकर साहब. Let's play out the tape once again. Here is what let's play out clip number 1. This is what Shaukat Ali said. ये सुनिए अंबेडकर साहब, ये आपके लिए फरमाइश पे चला रहा हूं. कभी ये लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे ज्यादा हो, कभी ये लोग कहते हैं 2 3 शादियां. यकीनन हम 2 शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं. तुम एक शादी करते हो, 3 रखते हो, किसी को नहीं बताते हो, ना उसको इज्जत देते हो. लेकिन हम
अगर 2 करते हैं तो इज्जत से करते हैं, बीवी बनाते हैं। उन बच्चों का नाम भी राशन कार्ड में होता है, आधार कार्ड होता है। और तुम्हारे नाजायज करदा बच्चे क्या करते हैं? क्या करते हैं? यही जो हुआ है इसौली विधानसभा में नारे लगा करके मार करते हैं। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे हैं। और ये कह रहे, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संडास और पेशाब दोनों का डालो। Now don't have much time on the show, but Mr. Ambedkar, अब ये सुनने के बाद will you change your stand? तुम्हारे नाजायज बच्चे, कीड़े मकोड़े, रखेल। यस अब आप सुन लीजिए ना, अब आप जवाब भी सुनिए ना। जवाब आप सुनते नहीं, बीच में आप इंटरप्ट अब आप करते हैं। अकबर के समय मत चले जाइएगा। अब ये इसी सर मैं 2022 की ही बात बता रहा हूं। आप सुन लीजिए, अब आप देखिएगा जरूर। आपने कहा देवदास, अब आप सुनिए। दैनिक भास्कर में एक जो है मनीषा भल्ला जी हैं, विवेक कहार साहब है और टीना जी हैं। इन लोगों ने रिपोर्ट किया है, आप जाइएगा। और एक सीरीज बन रही है, उसका नाम है पंथ। और उस पंथ में उन्होंने बाकायदा इस देश में किस तरह से महिलाओं के साथ धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा है, उनके बच्चों को जायज नाम नहीं मिल रहे हैं। ये कोटेशन रियल कोटेशन है, आप इसको कोट करिएगा। और बार बार मैं नाम ले रहा हूं, उत्तर केरी गांव है, उत्तर केरी गांव में आज भी। अब सुन लीजिए ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आप लोगों को कुछ पता नहीं। आप सुनिए, नेता आकर के इतना बकवास कर रहे हैं और आप सच्चाई की बात कर रहे हैं। 2022 की बात सुन लीजिए ना, आज की 2022 की बात नहीं सुनेंगे। आप उस पर क्यों नहीं टिप्पणी कर रहे हैं? अरे प्रणय साहब सुन ली। अब आप इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। नहीं, सच्चाई तो आप कह रहे हैं कि शौकत अली ने सुना है। सच्चाई ये नहीं, किसी को रखेल बोल रहे हैं। तुम लोग एक शादी करते हो, 3 रखेल रखते हो, ये सच्चाई है। गार्गी नंदी रॉय इज रिस्पॉन्डिंग टू यू। अब आप सुनिए। I want to interrupt. He is bringing, yes, Ambedkar ji, when you are talking about Devdasi Pratha, why don't you talk about nikah halala? आप लोगों को दिखता नहीं है। और हरिद्वार धर्म संसद, people were arrested. Yati Narasimhan ji was arrested. Everybody was punished. So don't give that example. Please wake up to the. You are supporting. No. First you talk about nikah halala. We will talk about Devdasi Pratha. Don't give answer of geography, history. When you are asked a question of mathematics, you have been asked a question. Answer that. Don't deviate. Don't deviate and don't heckle me. Don't heckle me. I'm inviting you to read Quran. आप कुरान पढ़िए। आप मिसगाइड मत करिए। आपकी एक नागपुर की स्क्रिप्ट ले लेकर मत बैठ जाइए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। देखिए, इस्लाम you want to say nikah halala does not happen. You want to say nikah halala does not happen. शादी देखिए 4 शादियों की इजाजत किस लिए दी गई है? वो कोई और धर्म में नहीं दी गई है, इसलिए दी गई है। I am talking about nikah halala. Answer that now. Why you give answer of geography and history when the question is about English? Your problem is you deviate from the question. You do not have a reply and you give some other answer. Okay, let's leave it at this. We've run out of time, unfortunately. I'm sorry. I've run out of time. Gargi Nandi Roy, Asif Sohail, Mithun Vijay Kumar, Pawan Rao Ambedkar, thank you for joining us on the debate. A case has been filed. Let's see what action is taken. More importantly, let's see what Mr. Asaduddin Owaisi thinks of what Shaukat Ali said.